we recall what we have done in the last classes. In the last class, we have done material overhead, we have done direct labor overhead. In the last class, we have done material overhead, we have done direct labor overhead, and I have given so many questions to you as homework. I think till 9 or 10 illustration we have done already. Am I right? In illustration 9 or 10 we have done. Niksha, is my voice is clear now? Okay. Thank you very much for responding. Varun, it is clear now. Uh, Please tell me about clarity now. Is it audible now? Voice is okay. I changed my input device. Thank you very much for responding. I think we shall start for next topic. And our next topic for today class is completion of overhead variance. So you already aware that there are two type of overheads on the and the classification is on the basis of variability. On the basis of variability. No screen. Screen is properly visible. Is it visible, Varun? Screen is visible? Okay, thank you very much. Okay, on the basis of variability of overhead, we have two type of variance. One type of variance is fixed and another type of variance is variable. Am I right? So, we have to start with a new topic, that is give me a second, please.
Please allow me for a second, please. Share. My screen is visible. Very much clear. Okay. So we have to start overhead variance, and we divide overhead variance in two categories. One is fixed category, one is variable category. Am I right? The screen is visible. Whatever I am writing, you are easily observe it. Right. Thank you very much. So, you can raise me a question that, sir, why not we divide into variable overhead and fixed overhead as factory overhead? You can raise some question like FAQ. Sir, why we cannot write factory overhead? We cannot write admin and office and admin and selling and distribution. Any one of you can give answer in chat box. Why we not subdivided into these type of overhead rather than we subdivided into fixed and variable? Any one of you, please. Any one of you can reply. No. My question is that we have divided the overhead variance analysis into two parts. One is fixed and one is variable. But we not divided into factory, admin and selling because the variance category is on the basis of their nature of degree of variability. So when we talk about factory, we may divide into fixed factory overhead or variable. Right. Good answer by one of the student that factory, admin and selling and distribution में वेरिएंस एनालिसिस को डिवाइड करने की जगह उसको सब कैटेगरी दो बनाई जाए. पहली कैटेगरी फिक्स्ड एंड सेकंड कैटेगरी वेरिएबल. एक्सेलेंट आंसर. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको एक टेबल बना के देना चाहता हूं और आई होप वो टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि आंसर कैसे करना है. एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने जो टेबल बनाया था कैसे बनाया था? तो मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं अभी आपको. हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. 10-11 से स्क्रीन पे आपके ये आ गया होगा. राइट. क्लियर. अच्छा. तो फर्स्ट प्लीज मेक अ टेबल विद मी सो दैट हम जितने भी आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें हमारे पास एक टेबल बनी होनी चाहिए.
सबसे पहले तो हम फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के लिए वी मेक सम वेरिएंस। इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। ये टेबल आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एंड देन वी स्टार्ट डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए, SR SH। SH का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। SR का मतलब स्टैंडर्ड। प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए मेरे साथ साथ। स्टैंडर्ड रेट। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। इट इज स्टैंडर्ड रेट व्हाट? पर आवर बेसिस और पर यूनिट बेसिस? दिस इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये आपने मेजर किया है टाइम पे, तो ये भी क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर बेसिस। गुड, दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज SRAH। AH mean actual time taken for the production. SRBH, it is 2, it is 3, it is 4. This table is very specific. ये थोड़ा सा, this table is narrow table. Next table will be broader table. So for illustration 12, 13 and 14, I will go for next table. For illustration 11, I will use this table. मेरी बात समझ में आ रही है? Please reply. Next one is AR, AH. So, if you ask me, sir, what are the type of variance? Efficiency variance, capacity variance, volume variance, expenditure variance, and cost variance. Excellent. Students who are replying, excellent. So, efficiency is 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. Add them up, you will get this. Expenditure is 3 minus 4. Add them up, you get 1 minus 4. Am I right? Please reply. So illustration 11 and illustration 15, we use this table. Shall we start with one of the illustration first? And then we थोड़ा सा हम टेबल को बड़ा करेंगे, और जैसे ही हम टेबल को बड़ा भी करेंगे तो थोड़े से और वेरिएंस अराइज होंगे।
हम इनको भी कवर अप करेंगे। तो थोड़ा सा आप इलस्ट्रेशन 11 को देखिए कहाँ है। पेज नंबर बताइए मेरे को। यस, पेज नंबर 142 पे आपको इलस्ट्रेशन मिला हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट देखिएगा, मेरे को निकालना क्या क्या है। मैंने बोला ये टेबल के हिसाब से चलूंगा मैं, राइट। इस टेबल के हिसाब से चलूंगा मैं, यहीं पे इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। तो मेरे को चाहिए क्या, कि जरा ये देख लेते हैं। जो जो चीजें मेरे को चाहिए मैं वो यहाँ पे पुट कर लूंगा। मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट बजटेड और एक्चुअल और क्वेश्चन में मैंने देखा, दिस इज माय क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 40 वीक इज दिस वन एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड इज, टोटलिटी मेरे को गिवन है, दिस टोटल इज rupees 1400 and this is rupees 1500. This is actual fixed and this is what, this is standard rate into budgeted hours. This is given to you and this is actual hours into actual rate. This is given to you. ये बात मेरी समझ में आ रही है फ्रेंड्स? राइट। तो आई एम कमिंग टू माय टेबल। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा, ये मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है। इसकी वैल्यू है 1500 और इसकी वैल्यू है 1400। यहां तक क्लियर है? प्लीज रिप्लाई if you say yes, then I move forward. Okay, I'm coming back to my question now. अब यहां देखिएगा, सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ स्टैंडर्ड हॉर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड हॉर्स और स्टैंडर्ड रेट। तो पहले स्टैंडर्ड रेट ही देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो है स्टैंडर्ड रेट में लेना चाहता हूँ पर आवर्स, राइट। टोटल आपका एक्सपेंडिचर जो है वो है 1400 का, फॉर हाउ मेनी आवर्स? 40 आवर्स। दैट मीन आपका स्टैंडर्ड रेट जो होगा वो होगा रुपीस, डिवाइड करेंगे तो 35 रुपीस पर आवर। एम आई राइट? एम आई राइट? और एक्चुअल आवर कितने वर्क हैं आपके? 32। तो ये भी कॉलम मेरा आसानी से बन गया क्या? स्टैंडर्ड रेट इज, आई हैव कैलकुलेटेड 35, actual hour is given to you 32, so this into 2, 35 into 32 is 1120. Now standard rate is 35 into, next I am required to calculate what? Standard hour for actual output. Please look at this, SH mean standard hour for actual output. What is actual output? Sir, actual output is 1200 and 40 hours is taken for 1400. 40 hours is taken for 1400 units.
So for 1200 units, as is its actual, so could I say 1200 divided by 1400 into 40? This will give me, anyone of you? 34.29. It is standard or 34.29. अगर मैं ये डेसिमल में ना लिखूं और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे 1200 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 40, तो शायद ये फ्रैक्शन ना आके एक परफेक्ट नंबर आ जाए। ये समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। सर प्लीज रिपीट। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे को ये जो निकालना होता है पहली बार, स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने होते हैं। आप मेरे को बताएंगे एक्चुअल आउटपुट है कितना? 1200 यूनिट है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 40 घंटे लगते थे कितने यूनिट बनाने में? 1400 यूनिट बनाने में। सही कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन में दिया हुआ ये बात। 1400 यूनिट्स को बनाने में 40 आवर्स लगते थे। तो एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये स्टैंडर्ड है, आपने निकालना होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो मैं कह रहा हूँ अब 1200 को बनाने में कितना लगेगा? अच्छा, कई बच्चे बताते हैं सर बुक में क्या किया हुआ है, बुक में किया हुआ है 1200 डिवाइडेड बाय 35। यस, आप इसको पहले डिवाइड कर दो। 1400 डिवाइडेड बाय 40, 35 आएगा। अब इस नंबर को 1200 डिवाइडेड बाय 35 को अगर मैं अगेन 1200 डिवाइडेड बाय 35 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर मेरा वही तो आएगा, कोई अलग तो आएगा नहीं। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, समझ में आया? राइट, चले हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल। तो अब हमारे पास टेबल आ गया है। सबसे पहले एफिशिएंसी वेरिएबल बताइएगा, ये सारे ओवरहेड्स बताइएगा। 1 माइनस टू दिस माइनस दिस 80, एडवर्स या फेवरेबल? 1 माइनस टू 80 फेवरेबल, 2 माइनस 3 दिस माइनस दिस 280 नेगेटिव का एडवर्स, 1 माइनस 3 या इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 एडवर्स। एम आई राइट? Then 3 minus 4, this minus this, again 100, adverse. Then 1 minus 4, या इन दोनों को जोड़ दीजिए 300 adverse. One student is writing 1466 minus, I don't know 1466 कहाँ से आया, क्या रेफर कर रहे हैं वो? वो बोल रहे हैं रॉन्ग। क्या रॉन्ग, आप लोगों को या मैं रॉन्ग हूँ? आप प्लीज चेक कीजिएगा, आप ही चेक कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओके, बाय मिस्टेक। ओके, मैंने बोला इस टेबल पे बेस हम दो इलस्ट्रेशन करेंगे। एक तो इलस्ट्रेशन करना था हमने 11, होप सो सबको क्लियर हुआ है।
एक हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 15। प्लीज इलस्ट्रेशन 15 को देखिएगा। हमारे पास 23 इलस्ट्रेशन है। आज का टारगेट है आई थिंक मैं 16-17 इलस्ट्रेशन तक करा दूं, फिर एक इलस्ट्रेशन रह जाएगा। दो टॉपिक रह जाएंगे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का और सेल वेरिएंस का। हम 2-3 एग्जांपल उस पर भी कर लेंगे और हमारा उसी के साथ सिलेबस कंप्लीट होगा। प्लीज इलस्ट्रेशन 15 देखिएगा। पेज नंबर भी बताएं मेरे को। इलस्ट्रेशन 15 15। यस, तो हम ये अब अपने तरीके से करेंगे, राइट। पूरा सॉल्यूशन पेपर में जैसे करना है। A company is manufacturing two type of product and operates standard costing system. The standard overhead content of each product in cost center 101, एक कॉस्ट सेंटर है 101, उसका एनालिसिस आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है प्रोडक्ट ए ₹2.40 विद इन ब्रैकेट 8 डायरेक्ट लेबर और एट द रेट 30 पर आवर, एंड बी के ऊपर में बोल रहा है वो ₹1 ₹80, 6 डायरेक्ट लेबर आवर एंड 30 पर आवर। अब वो कह रहा है ये जो 30 कैसे आया, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 30 आया ये कैसे आया, हाउ इट अराइज, ये नीचे मैं इसकी डिटेल दे रहा हूं इस 30 पैसे की। वो कह रहा है बजटेड और ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड रुपीस में दिया हुआ है ₹570। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स ₹1900। आउटपुट ए का, आउटपुट बी का, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। आप खुश हो गए, डांस करने लग गए, वाह वाह वाह। ओके, एक्चुअल डायरेक्ट और वर्क इज 2320 और एक्चुअल ओवरहेड incurred is ₹640। आपसे उसने वो तीन चीजें बोली है अक्टूबर के महीने की निकालने की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड फॉर अक्टूबर, एंड बी में उसने बोला है कि वेरिएंस निकाल दो, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आप कॉस्ट पे निकाल दोगे वो लड़ेगा नहीं आपसे। क्या हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करें? ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला आप टेबल बनाएंगे। टेबल में ये कॉलम जरूर होने चाहिए आपके पास। एसएच, RSSH, इसको नंबर 1 देना है। SHAH, SRBH और ARAH। ARAH ये आपको तो क्वेश्चन में गिवन ही है 640 और ये भी गिवन है 570, राइट? एम आई राइट? ये 570 यहां से दिया हुआ है। दिस इज SRBH। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो 1900
बजटेड ऑर्स देखिएगा कितने हैं आपके पास। बजटेड ऑर्स, मैं पहले स्टैंडर्ड और निकालता हूँ फिर बजटेड और आपको बताता हूँ, राइट। ओके, एंड हमारे पास ये दिया हुआ है 100 यूनिट इंटू में 8 प्लस ये 200 यूनिट इंटू में 6, 800 प्लस 1200 दैट इज 2000 आवर्स। ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं एसएच। और स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन ही है 30 पैसा। तो मैं यहाँ आता हूँ वापस अपने टेबल पे। स्टैंडर्ड आवर इज स्टैंडर्ड आवर इज 2000 into the 0.3, it will come to be 600. Am I right? Standard rate, it is 0.3 into actual hours. Actual hour आपको क्वेश्चन में गिवन है, this is 2320 2320 into the point, it is 0, ये हटा दी मैंने, this is 6396। आपके पास इंफॉर्मेशन आई गई काफी। आप क्या निकालेंगे बताइए, सारी लाइन लगा के बताइए सारी चीज। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 1 minus 2, that is minus 96, or I could say 96 adverse। अगला कैपेसिटी 2 minus 3, 2 minus 3, that is 126 favorable। Then 1 minus 3 is volume। इन दोनों को आप एड अप कर दीजिए एक अच्छा तरीका। तो 36 नहीं 30 आएगा फेवरेबल। नेक्स्ट वन इज बजटेड या एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। Screen is visible now.
Okay. So better, can I move to next question and prepare a new table? Can we move to next table and prepare a new? Okay. Let's prepare a new table. Standard hour, and it is for actual output. Again, we are doing fixed overhead variance analysis. Next one is standard rate. Standard rate, standard hour. This is our first. Standard rate into actual hour. Second, standard rate into revised budgeted hours. Third, standard rate into budgeted hours. Fourth, actual rate into actual hours. Fifth, this all calculation are based on hours-based calculation. Am I right? So again, we have to calculate efficiency, capacity. Now new variances, calendar, volume, expenditure, and the last one is cost. So it is 1 minus 2, 2 minus 3, 3 minus 4. Add them up, you will get 1 minus 4, 1 minus 4, then 4 minus 5. Add these two up, you get 1 minus 5. Is it clear to you? Please reply. These are, this table is prepared on the basis of time. I want to prepare one more table, and this table will be based on not time, on the basis of output. Clear? Can I prepare one more table on the basis of output? So first write SRAQ. This one is first. Second is SRSQ. Third one is SR into my revised budgeted quantity. Prem Pratap, you are asking for this screen. Prem Pratap, you are asking for this. Okay. आई थिंक ये फॉर्मूले मांग रही हो क्या? ये ऊपर की हेडिंग. मैं चलूं नेक्स्ट स्क्रीन पे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please reply. Could I move to next screen? Okay. On the basis of output, we have 1, 2, 3. Fourth one is standard rate into budget quantity. Fifth one is
actual rate into actual quantity. And same, you have everything same. This all formula fitted into this one too. First one you have efficiency, capacity, calendar, volume, budgeted or expenditure. Next one is cost. Right? Am I clear? But there is a problem when you do illustration 16. For that, I am also again preparing a new table, right? SRAQ, SRRBQ, SRBQ, ARAQ. This is 1, 2, 3, 4. So you know what I mean to say? Something is missing. If you do illustration number 16, so there you will find efficiency, calendar, 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3 will be volume, budgeted is 3 minus 4, so cost will be 1 minus 4. So illustration 12, 13, 14 up to 17 or 18 we are going to start based on this. Yes, Harshita, you are right. SRSQ was missing there when you will start illustration 16. Shall we start illustration 12? Only this piece of information is given to us, and we are required to calculate a lot of things. Number of working days, budgeted actual 2022. Output per man 1.0.9. Overhead cost man hour per day. So what we are required to calculate? Lot of things is required. Shall we do in the solution part or my on? I want that I should do my on. But it's not visible. Okay. This is illustration 12, right? Shall we start it? Could I do it on my basis? Right? We shall prepare a table. Thank you very much. Now, look at what is given to us and what we are required to find. First thing. Do first thing first. Prepare a table and in table check what is given and what is we are required to find. What I should write first?
SH4 standard output, actual output, standard rate. Then my first column is SRSH. Second column is SRAH. Third column is SR revised budgeted or. So I am doing calculation on the basis of hours. आवर के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में करवाऊंगा जहां आवर के बेसिस पे भी आएगा और यूनिट के बेसिस पे भी आएगा। अभी हम चलते हैं उस पे भी। फोर्थ क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड आवर इनटू में बजटेड, स्टैंडर्ड रेट इनटू में बजटेड आवर, फोर्थ। एंड फिफ्थ वन, लास्ट वन क्या होता है, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल, फिफ्थ वन एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, राइट। अब देखिए जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, सबसे आसान बात तो ये, ठीक है। देखिए क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। कैसे देखते हैं यहाँ पे जरा, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एक्चुअल, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, जो मेरे पास गिवन है उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। दिस इज ARAH, ये वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 168 की, राइट। SRSH निकालना है मैंने, SRAH निकालना है, SR रिवाइज बजटेड आवर्स और SR बजटेड आवर्स, 1 2 3 4 and 5। Screen is visible, I think so. You are saying screen is not visible. There is some problem at server. Is this one is visible now? मैंने जितना काम किया दिखाई दिया या नहीं? अच्छा अभी तक किया है, 168 ही लिखा मैंने अभी तक। So this is 168, right? Given in the question, right? And check what is more given, more piece of information.
SRBH is also given to us. Again, there is some problem in screen. Am I right? I don't know what is happening. Server delay at my side. Give me a second. Let me to check whether the problem at my side or problem at server. It's showing your internet connection is weak. Varun, whatever I am writing, it is not visible. Am I right? This happening? Okay. I think there is a server problem. So should I? This one is PDF, but I don't want to be. Okay, मैं इस PDF फाइल में समझाऊँ आपको? Please reply. ये 168 कैसे आया? This one is clear. This one is clear. ये जो हमने अभी ऊपर से लिया है, right? Okay. Then this 160 as it is, this one is clear too? Okay. Then next चलते हैं हम. सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट निकालते हैं. देखिएगा व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. दिस इज 160. This is 160. This is standard cost. For how many working, for how many time period? 8,000 into 20. 8,000 into 20 give me 160. Am I right? Please reply. Meanwhile, if there is some problem in network, this numerator 160 come from where? This one. This denominator 160 comes from 8,000 into 20. So this is your standard rate. This standard rate SR is clear to everyone? Please reply okay or not. Okay or not. Thank you. Next, I am required to calculate. Next, I am required to calculate actual hours. Just consider actual hour. If I say 8400 into 22, how much? 8400 into 22, this give me actual hours. That is 84, this one, 84, 1,84,800. So I multiply 1,84,800 multiply by 1. This give me SRAH. This give me SRAH.
Okay, thank you very much for having some patience. This is ARAH. This is SRBH. This already we have calculated 168. This already one we calculated 168. And SR, how we calculated SR? SR we have calculated. SR we have calculated standard rate. This is rupees. This is 8,000 units. Units into 20. These are days. So this will work out 1. So 1 into so many things. Now first one is I'm writing SR. ये मेरा आउटपुट बेस का टेबल था, प्लीज इसको मैं एच में कन्वर्ट कर रहा हूं। एस आर एस एच एस आर ए एच। तो स्टैंडर्ड रेट मेरा 1 था। अब जरा देखिएगा मैंने क्या क्या कैलकुलेट करना है। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इज इक्वल्स टू बजटेड आवर्स, फॉर्मूला इज बजटेड आवर्स इनटू में एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेज। देखिएगा बजटेड डेज कितने हैं, अभी अभी आपने निकाले थे बजटेड डेज। 8,000 इंटू में 20 इंटू में एक्चुअल डेज कितने हैं, क्वेश्चन में एक्चुअल डेज दिए हुए हैं 22 और बजटेड दिए हैं 20। so this calculation gives you 176,000. Am I right? Please reply. This step is clear. Okay, thank you. So it is 176. 1 into 176 give me 176. Can you tell me what is actual hours? Actual hours is, देखिएगा जरा क्या, 8400 units into में 22 per day into 22 days. This give me 184,800. 184,800 into में 1। ये भी क्लियर हुआ मेरा? क्लियर? अब कुछ एक रह गया हमारा आइटम। यस, स्टैंडर्ड और standard or for actual output, for actual output standard था 0.1 और 184,800 को अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, सो दिस इज माय 166,320, दिस वन actual quantity, so 166,320 into 1. Please, you can do all the calculation. Can I go with next question? Okay. Thank you very much, and thank you so much with having so much patience, because some problem at my side was there related to network might be. Am I allowed for illustration 13? Am I allowed for illustration 13?
I think screen is visible properly. Right. Manufacturing operate. Thank you, Harshita, for responding. Thank you, Varun. Thank you, Nisha. Manufacturing company operate costing system show the following data in respect of November. Actual number of days, actual hours during the month, number of item produced. Now just look at question, it is very interesting. This question and illustration next 14 are also interesting. तो पहले हम ये करते हैं relevant information for the company budget. देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको एक्चुअल और दिया हुआ है ये बजटेड। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 0.5 से, तो ₹2000 मेरे ही आ जाएंगे बजटेड। तो अगेन मैं टेबल पे आ रहा हूँ। टेबल पे क्या क्या करना होता है, SR 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 रिवाइज बजटेड और बेस कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। SRBH अभी अभी निकाला ये SRBH 4, that is 4000 into with 0.5 2000 और ARAH ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 5th 1 2 3 4 5 ये गिवन था 1800। मेरी बात ये समझ में आ रही है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। क्या हम चले नेक्स्ट पे? चल सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट देख लेते हैं क्या है। मजेदार वाला क्वेश्चन है। ये था बजटेड और ये था स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट तो मेरे पास पता ही है 0.5 है, इनटू में ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्या चाहिए? एक्चुअल आवर्स। तो मैं क्वेश्चन पे आया, चेक करता हूँ एक्चुअल आवर क्या क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिएगा फिगर, दिस इज एक्चुअल आवर्स, राइट? एम आई राइट? रिप्लाई विद ओके और नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ आया, एक्चुअल आवर्स मैंने लिखे हाउ मच 4300 4300 into 0.5, this give me 2150 2150। चले हम आगे। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर तो बहुत अच्छे से निकलेंगे, देखिएगा कैसे। एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट है 425 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। तो मेरा स्टैंडर्ड और दिस इज स्टैंडर्ड और फॉर व्हाट? एक्चुअल आउटपुट, दिस इज एक्चुअल आउटपुट is 4250. So I am coming back. This is my 4250 figure. 2125. Now this one is RBH, revised budgeted hours. Any one of you can tell me revised budgeted hour is budgeted hour into actual day divided by standard day.
What is budgeted days? Budgeted hours given in the question 4000. Actual day 22. This one 20. So this is work out to be 4400. This is 2200. Is it okay? I'm waiting for your replies. कैलकुलेशन कीजिएगा बताइएगा 1 - 2 1 - 3 1 - 2 sorry 2 - 3 3 - 4 1 - 4 4 - 5 1 - 5. This is efficiency, capacity, calendar, volume, expenditure, and this is cost. Right? I think this part you can do at your own. Can I move forward? Okay. So, one more illustration. Uh, this one is illustration 14. Okay. Uh, we read it first and then start it. SP Limited furnish you following data: number of working days, production, fixed overhead. Budgeted as well as actual is given 25, 27, 20,000, 22,000, 30,000, and 31,000. Fixed budgeted fixed hour rate is rupees 1 per hour. This is very critical information. We rate at standard rate to be 1 per hour. Am I right? Am I right? Okay. And second critical information is actual time. Actual time. This one and this one we have in July 2012. Right? This one is July 2012 data. You are required to calculate all these five, right? Firstly, you tell me whether it is a question of fixed overhead or variable overhead. ये क्वेश्चन कहाँ से है? फिक्स्ड वेरिएबल से, फिक्स्ड ओवरहेड से या वेरिएबल ओवरहेड से?
from in table, line number 3 is given to you. हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपना, राइट? हम इसका अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें. सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. देखिए, ये वाला टेबल मैं और बेसिस पे बना रहा हूँ. इसी का मैं आउटपुट बेसिस पे भी बनाऊंगा. ठीक है, बताइए क्या क्या चाहिए. 1 2 3 4 5 ARAH, SRBH, SR into a device budgeted. What should I write? Q or H? क्या लिखूं मैं? Excellent. So I am rubbing it. Intentionally I am writing. It is H because my calculation is hourly basis. So every item is standard rate will come per hour basis or revised budgeted hour will come, right? So it is SR into AH, not AAQ, and it is SR into SH. Now this is given to me 31,000. Just check. This is given to me, and एक तो ये given है, एक ये given है. तो एक फिगर मेरे को ये given है, ARAH. ये फिगर given है. स्टैंडर्ड रेट गिवन है, बताइए. ₹1. Am I right? Please reply. Am I right? Now, what you are required to calculate? You are required to calculate standard or SH for actual output. Just consider what is just consider SH standard or per unit basis, right?
Then we go for the hourly calculation. Standard time per unit. I want to know what is standard time per unit. If I multiply with with actual output, this will be my standard or for actual output. Am I right? This one concept is clear कि मैं क्या करने वाला हूँ? Now देखिएगा मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने गिवन है क्वेश्चन में 30,000. This one given to me, right? और ये कितनी यूनिट के लिए गिवन है 20,000 यूनिट्स के लिए गिवन है और आपका स्टैंडर्ड रेट क्या है ₹1 पर यूनिट per hour also. So would I say 30,000 unit into my one, it's also give me 30,000 hours, or would I say if this one is rupees, this one is unit, this one is rupee. मतलब आपका कितने आवर्स लगते हैं टोटल आवर्स 30,000 hour for making how many unit for making 20,000 units. तो 1 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा that is 30,000 divided by 20,000 1.5 hours. और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है एक्चुअल प्रोडक्शन है आपका 22,000 यूनिट्स का तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट will be 1.5 into 22,000 that is 33,000. So into this is 33. Right? Is it clear? और एक्चुअल आवर्स कितने लगे आपके एक्चुअल आवर लगे आपके 31500. This one clear both calculation कैसे आया or should I repeat? Now okay, no issue, I will repeat everything. Just consider from here one student asking me to do it again. What I am saying, just consider the cost. Cost is given to you 30,000 rupees. Where this one, this cost is 30,000. And what is standard rate? 1 rupee per unit. And I am calculating on the basis of time. I am calculating on the basis of time. So my time cost per unit, per hour basis into total time is my total cost. This total cost is given me 30,000 and cost
per hour, that is standard rate per hour into time is 30,000 and this is rupees 1. So could I say how much time 30,000 hours for making 20,000 units? Can you tell me time to make 1 unit equals to 30,000 divided by 20,000, which is equals to 1.5 hours. Am I right? Okay. Now, how much actual hour you have done work or actual units? Actual unit produces 22,000. So 22,000 into my 1.5 will be my standard or for actual output that I am saying. This is 33,000. Please reply. Am I right? Now should I calculate revised budgeted hours? How one can calculate RBH? RBH equals to BH into actual day. Actual day is 27 divided by standard day is 25 and budgeted. How much you have budgeted? Budgeted is 30,000. We have just calculated. So this number will work out to be 32400. Is this one is clear? Please reply. तो क्या मैं चलूं अभी इसी को अल्टरनेटिव 2 से करूं क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन विद अनदर अल्टरनेटिव प्लीज what is my heading now? Heading is quantity based calculations. Now this is actual rate into what? AH or AQ now? This is SR into BQ. This is SR into revised budgeted quantity. Earlier we have revised budgeted what? Hours. Now we have quantity. Next one is SR into AQ first, SR SQ. यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखना इस पे। आ रही है बात समझ में ना? ऊपर टेबल में ये था SR इंटू में SH। बोलो तो लिख दूं ऊपर ही, फिर बाद में लड़ाई करूं। SR SH and this was SR AH and बाकी कहीं और नहीं है। SR RBH SRBH ARAH
ये पहले ये था, सिर्फ इन दो को चेंज किया है ना क्वांटिटी बेस्ड कैलकुलेशन में. This is given to you 31,000. Yes or no? This is also given to you. Now just check, for producing 20,000 units, you have incurred 30,000 rupees expenditure. So any one of you calculate what is the value of X? That is 20,000 rupees into standard rate is equals to 30,000. So SR will be how much? 1.5. Easy. SR I am want to find 1.5. Just check actual quantity. First check actual quantity. What is the actual quantity? Into my 22,000. Am I right? Am I right? 22,000. This is okay. So this figure is 33,000. This figure 30,000. This is 31,000. First we do RBQ. Any one of you budgeted quantity into actual day divided by standard day. What is budgeted quantity? अभी अभी तो निकालेंगे 20,000 into actual day 27 divided by 25 21600. That is 32400. Am I right? Is it okay? Now SQ. What is SQ? SQ means standard quantity for what output? Actual output. Just consider now. This is standard quantity for actual time you have to take now, because above calculation is on the basis of. Now what is actual time first? Actual time is 31500 hours. Am I right? And any one of you can tell me unit in 1 hour. We already calculated budgeted hours in the previous section as 30,000, and standard quantity given me in the question is 20,000. Just consider standard quantity is given me how much? This one, 40,000. And budgeted hours we already calculated. How much? 30,000. Question, how we calculated? I already told you standard rate per hour into time is equals to your cost, 30,000. The standard rate is rupees 1. So what is time? Time also come out to be 30,000.
So any one of you can tell me एक और में या 20,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 30,000 घंटे लगते हैं। और ये जो टाइम है ये स्टैंडर्ड है। तो 31,500 का क्या स्टैंडर्ड होगा? सर इट इज वेरी सिंपल, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ये 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आ गया, तो ये कितने का स्टैंडर्ड आ जाएगा? एम आई राइट? सी राइट। So this will work out to be 21,000. This is multiplied by 21,000. This is how much? 31500. Now go back to previous table. So just check the two table and its comparison. What is this answer? Both table give you same result. Am I right? Am I right? Both table is giving you same result. 33,000, 33,000, 31,500, right? 31,500. Then 32,400, 32,400, third figure. Am I right? Please reply. Have you understand both of the table? Both table give you same conclusions. So you calculated on the basis of quantity, you calculated basis of okay. Illustration 15 we have already done. Illustration 15 we already done. Fourteen we have done right now, I think so. 15 we have done earlier.
Shall we do 16 illustration? 18 and 19 I am giving you homework. 18 और 19 आप खुद करेंगे. There is one, okay, one more question I want to do. Please reply. Shall we do it? Or you are facing any problem? I know there is server problem at my end today, and it's generally happen whenever we do some important work. System is showing hang. Let me understand illustration 16. From 16 question, you just check one interesting thing come to know. Variable overhead is introduced now. Am I right? 16 या तो मैं आपको होमवर्क दे दूं बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड का इसमें ज्यादा है नहीं. एक छोटा सा पार्ट ही पूछा गया. बस वेरिएबल ओवरहेड का इतना सा पार्ट आएगा, राइट. लेकिन 17 में वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा है. प्लीज रिप्लाई कीजिएगा मेरे को चैट बॉक्स में. Shall we do 17? Yes, we do it. Seventeen in next class. और बेटे नेक्स्ट क्लास में आई हैव टू कंप्लीट क्वांटिटी वेरिएंस एज वेल, सेल वेरिएंस. तो उसके एक एक दो दो ही क्वेश्चन उपाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. 23 तो है ही है आपके पास. ओके, लेट अदर टू रिप्लाई कि क्या कहते हैं. 17 अभी करना है, नेक्स्ट क्लास में करना है, एज ऑल विल डिसाइड. Varun, my screen is visible or it's showing some problem. Okay, then we will do it next class, no issue. Now, please wait. I'm not allowed you to go. I'm not over yet. Now screen is visible. Am I right? Am I right, please? Yes. Okay, we are doing illustration 17 first. Then you will be allowed. Please. I will do it very quickly. Right? Is it okay?
Please look at here. Now what is given? I'm just immediately writing. You just check, preparing a table. 1, 2, 3, 4, 5. This is for fixed overhead. Let me to complete variable overhead as well. We are in today class only. SL, SRSH, SREH, SR revised budgeted hours. I'm calculating hourly days. Standard rate budgeted hour. Actual rate actual hour. Actual rate actual hour is given you in question 50,000, and this one is also given you in question. Just consider for 30,000 hours into what is standard rate per hour. Cost is given to you 45,000. So could I say it is standard rate is 1.5? Am I right? When it is 1.5, am I right? Please reply. Actual hour is given to me 33,000. It is given in question. So this one calculation done, this one done. 33,000 into this is 49,500. I'm required to calculate. I'm required to calculate standard hour for actual output. Standard hour for actual output. Actual output is 3 to 500 units. And what is standard hour to make 1 unit? Just consider 30,000 units is produced in 30,000 hours. This is given in question. So 1 unit can be produced in 1 hour. So this many unit is produced in 32500 hours. So this is 48,700. You know, revised budgeted hour is budgeted hours into actual day by standard day. Actual day is 26. This is 27, and budgeted hour we already know. Budgeted hours we already know. This is 30,000. So this calculation give me 31200, 31200, and this will work out to be 46800. Am I right? Please reply. This is okay. Thank you very much. Now I am doing variable hour. Let's see complete it. We have sufficient time. For budgeted hour, we are required to calculate SR, SH, SRAH, ARA. 1, 2, 3. So efficiency is 1 minus 2. Expenditure is 2 minus 3. And the last one is cost is 1 minus 3. This one is given to you. Just check in question, it is given to you 68,000. This is given. Right? Am I clear? Please reply with okay if you understood. Now, you are required to calculate standard rate. What is standard rate? Standard rate
68,000 rupees, 60,000 you have incurred. This is your standard expenditure for how many unit? 30,000 unit. So what is standard rate? Rupees 2. So this is 2. Am I right? And what is standard hours and actual hours? Actual hour is 33,000. It is again given in question. And standard hour is 32,500. अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाले हैं. So this will work out to be 65,000. This is 66,000. This is 68,000. Now efficiency variance 1 minus 2. 1,000 adverse. 2 minus 3. This minus this. Again 2,000 adverse. Then this minus this 3,000. This also cover our variable hour. We have finished our variable hour at 2 days, right? So in next class, we will start quantity variance, sale variance, and in next class, I will complete my part of all syllabus, right? Thank you very much for your so much patience level. Extremely apologies for some network issue at my side. Thank you very much, ICI Institute. Please, if you want to leave, you can leave. If you have some doubt, you can ask.